Well, good evening, guys. Today Yeah, we're okay. going to be studying the book of Amos. RP picked this book out, and I think it's unique because I've never studied it, and it's one of the minor prophets that's ignored, probably doesn't get the credit that it should be. So Dr. Dale is going to take us through the introduction to Amos and how it fits into the big picture of God's plan. ओके सो Dr. Dale? दोस्तों हम लोग जो है आज शुरू करेंगे आमोस की पुस्तक से। और आमोस की पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और जैसे काम करें कि हमने अभी तक इसको पूरी रीति से पढ़ा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये मेरा चुनाव था कि आमोस जो है कई मायने से अ, हमारी परिस्थितियों के लिए जो है आमोस की पुस्तक हमारी परिस्थितियों के लिए बहुत ही अच्छी है। और जहाँ पर धार्मिक पाखंड से लेकर के सामाजिक अन्याय और और व्यवस्था के प्रति जो कहने का मतलब अनादर की जो भावना थी वो देखने को मिलती है। और वो अपने जीवन में भी या वर्तमान समय में भी हम इसे देख सकते हैं किस प्रकार से ये उपयोगी पुस्तक है। यस। So as we begin, guys, I hope everybody has this outline. So we're just going to walk through it, the introduction, as quickly as we can. But it's a lot of information that must be understood. ओके सो आप हमें उम्मीद है कि आपको जो क्या नाम है इसकी आउटलाइन भेजी गई थी व्हाट्सएप पे, तो आपने डाउनलोड किया होगा। और हम ज्यादा समय न लेते हुए हम इंट्रोडक्शन को बहुत जल्दी से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें सीखना है। So the name Amos means burden or burden bearer. और जो नाम आमोस है, आमोस का जो मतलब होता है वो आमोस, इसमें सब सारे प्रॉफिट की बुक है, तो इसमें आप आमोस वाला जो है क्या नाम है रोल डाउन करिए। तो आमोस का मतलब होता है बर्डन, बर्डन बेयर, यानी बोझ उठाने वाला। So when we read the book, what we're going to find is Amos is going to reflect his name and how he writes. He's going to write about judgments or burdens or woes, which are, as a prophet, he's going to be delivering upon Israel. तो यहाँ पर जो ये बुक है, जो एक पुस्तक है, इस पुस्तक में विशेषकर न्याय है एक प्रकार का, जो परमेश्वर का आने वाला है इस देश पे। तो उसके बारे में उसके अंदर जो बोझ है वो डिलीवर करना चाहता है इसराइल को। Now, you could call Amos a lay prophet, okay? He did not go to the school of the prophets to learn. He learned तो everything, experientially on his own. तो आप आमोस को जो है एक अनपढ़ प्रॉफिट के रूप में कह सकते हो, कि क्योंकि वो किसी भी प्रॉफिटिक स्कूल में नहीं पढ़ा है, उसने अपने अनुभव से और परमेश्वर के संबंध से सब कुछ सीखा। He's from a very small village called Tekoa, okay, और which is ये 5 miles south of Bethlehem. और वो बैतलहम के 5 मील दूर दक्षिण की तरफ जो है एक गांव है टिकोआ, टिकोआ गांव का रहने वाला था। He was first and foremost a farmer, and as a farmer, a businessman, and then lastly, a preacher because of God's calling on his life. और ये किसान है, अगर जो देखा जाए तो सचमुच एक किसान है, एक चरवाहा भी है, और उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी के लिए बुला लिया। So his business involved both raising and taking care of sheep, as well as fruit growing fruits of all kinds. तो इसका जो मुख्य व्यापार था वो जो भेड़ें थी उनकी रखवाली करना, उनका देख रेख करना और पालना पोषना, और जो जो एग्रीकल्चर फ्रूट्स थे उसकी उसकी निगरानी करना। Now,
I believe it's still true to this day that the exportation of fruits from Israel is one of the top 3 or 4 uh, uh, what's the word I'm looking for? Businesses of the nation of Israel. Okay. अगर जो ये बात आज भी सत्य है, क्योंकि इसराइल में अगर जो 4-5 टॉप बिजनेस कहा जाए तो उसमें से जो फ्रूट एक्सपोर्ट है, फलों का जो निर्यात है, वो सबसे ज्यादा होता Uh, he was, when you read the book, you'll find out that he's got a great mind, okay, but he's very artistic. He's very, I call him the sneaky prophet, okay? He's going to come up, he's going to get your attention away, and then he's going to slap you upside the head. है। तो ये एक प्रकार का ऐसा लगता है तांग झांक करने वाला प्रॉफिट है कि आपका ध्यान पहले वो खींचता है, उसके बाद जो है वो जो बात कहना चाहता है। He had a very deep concern and repulsion of social injustice, okay? And he had the courage to confront it. और वो जो है सामाजिक अन्याय जो हो रहा था उस देश में, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जो है इस ये बहुत ही जागरूक है और उनके प्रति वो आवाज उठाना चाहता है। Like Jonah, Amos was a missionary prophet. He lived in the southern kingdom, but he went to the northern kingdom, Israel, to prophesy. योना की तरह से ये एक मिशनरी प्रॉफिट था। पैदा तो ये दक्षिण में हुआ था, लेकिन उत्तर में जाकर के प्रचार करता है। तो इस प्रकार से योना की तरह से हम कह सकते हैं कि नीनवे को जब जाता है तो अपना देश से को छोड़ करके नीनवे को जैसे प्रचार करता है, वैसे ही ये भी अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में नदर्न किंगडम में जाकर के प्रचार करता है। And concerning who wrote the book of Amos and the time or the date of the writing, there's very little controversy because it's well known, it's well documented. तो ये किसने लिखा है और इसके बारे में बहुत कम विवाद है, क्योंकि ये बहुत ही प्रमाणित स्रोत है, तो इससे ज्यादा विवाद नहीं है इसके आधारशिप पर। He actually prophesied during the golden years of the northern kingdom and the southern kingdom. और ये उस समय प्रचार कर रहा है जब दक्षिणी और उत्तरी दोनों राज्यों का जो है स्वर्ण युग चल रहा था। उस स्वर्ण युग में ये प्रचार किया। So we're going to see that we're going to have to date him somewhere between 767 and 752 BC. तो ये कहीं 767 बीसी से लेकर के 752 बीसी के बीच में ये प्रचार किया है। Now, in verse 1, he's going to mention a great earthquake. Okay, this must have been an incredible thing because over almost 250 years later, Zechariah mentions that same earthquake. और पहला पद जो है भूकंप से शुरू करता है, और ये भूकंप जो है ये ऑलमोस्ट कुछ समय के बाद करीब 15 जून और 663 ईस्वी में बीसी में यशायाह ने भी करीब करीब यही भविष्यवाणी की थी। Now, the interesting thing is astronomers, supposedly in chapter 8, verses 8 to 10 of Amos, he connects the earthquake to a solar eclipse, and that solar eclipse can be dated by astronomers. It was dated in June 15th, 763 BC. और ये जो है जैसे एस्ट्रोनॉमिकली अगर जो देखा जाए तो ये जो भूकंप की चर्चा किया है कि भूकंप के 2 वर्ष पहले जो दर्शन इसे मिला है
ये जो दर्शन जो मिला हुआ है इसका अगर जो टाइम देखा जाए तो करीब 767 BC 15 जून 767 BC के आसपास ये मिलता है, जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर इस बात को कहते हैं। So this was a time frame when Egypt was weak and Assyria was was a rising to power, but yet not powerful enough to come down and conquer Israel. और इस समय जो है देखा जाए तो क्या नाम है, सीरिया के लोग जो है पावरफुल हैं, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो इसराइल पर आकर। But Amos could see it on the horizon. He could see the threat of Assyria on the horizon. लेकिन ये देखता है कि सीरिया पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो इसी का है। And just a couple of decades earlier, Israel came down and almost destroyed Jerusalem. So they were having fierce battles between the two kingdoms. और ये जो है कुछ समय के बाद सीरिया आएगा, आक्रमण करेगा, नाश करेगा, और ये दोनों राज्यों के बीच में बहुत सीरियस बैटल होगा, बहुत ही गंभीर युद्ध होगा। So if you look at the religious setting, Israel's calf worship in Bethel was 170 years old at the time of that Amos was ministering. और जो वहाँ की धार्मिक स्थिति को देखा जाए तो करीब जिस समय आमोस प्रचार कर रहा है उससे करीब 170 साल पहले से ही वे लोग बछड़े की पूजा किया करते थे। Okay, so morally, the nation was corrupt through and through. Okay, नैतिक रूप से the upper class was wealthy but wicked. तो नैतिक रूप से देखा जाए तो इसराइल पूरी तरह से भ्रष्ट था। जो ऊपर जो बैठे हुए जो लोग थे वो बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट थे। The prophets and the priests served for personal gain, just like a lot of preachers today. बहुत सारे प्रॉफिट जो थे और बहुत सारे प्रीस्ट जो थे, पर जो व्यक्तिगत फायदे के लिए वो प्रचार करते थे, जैसे आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी करते हैं झूठ व्यक्तिगत लाभ के लिए। Social injustice to the poor was the norm. The poor were taken advantage of constantly. और जो सामाजिक अन्याय था वो बहुत बड़ा था, और गरीबों को जो है इस समय गरीबों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा था। So Amos attributed all this corruption, okay, to the kings and to the priests. और आमोस जो है ये सब भ्रष्टाचार देख रहा है कि जो प्रीस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, याजक लोग वो भी इन्वॉल्व हैं इस भ्रष्टाचार में, और जो राजा है वो भी इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। He's going to declare in his book that both the king, Jeroboam II, and the priest, Amaziah, would both be destroyed by the sword. और यहाँ पर ये देख रहा है दर्शन में कि ये इस्राएल और शोर का जो राजा है वो सब नाश किए जाएंगे। So let's see. The purpose of the book of Amos was to sound a trumpet warning to Israel's leadership and upper class of the impending judgment of God upon the nation. He was just warning them, judgment's coming if you don't repent. तो मुख्य रूप से जो मुख्य उद्देश्य था इस पुस्तक को लिखने का या आमोस के प्रचार करने का जो मुख्य उद्देश्य था, इस्राएल को चेतावनी देना, कि इस्राएल के विशेषकर नेतृत्व को चेतावनी देना, उनके अगुओं को विशेष करके राजा और याजकों को चेतावनी देना कि यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। So he's not really saying that, you know, they have messed up their religious practices. Rather, what he's saying is the spiritual, moral, and social fabric
of society was completely corrupt. तो ये कहना क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नैतिक रूप से जो धर्म व्यवस्था थी वो भ्रष्ट हो गई थी, बल्कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक ताना बाना है, और जो पवित्र शास्त्र की शिक्षा है, उस शिक्षा के अनुसार जो सामाजिक ताना बाना बाना होना चाहिए था, उसको चुनौती मिल रही थी, वो कमजोर हो रहा है। Now, the interesting thing is, he starts off his book in chapter 1 talking about the lion of heaven, the lion roaring in righteous judgment. So here the lion isn't Satan. Here the lion is God himself. और कई जगह जहां पर आप देखते हो कि जब वो बाइबल बताती है शैतान और शेर की दहाड़ के बारे में, तो परमेश्वर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो शैतान। Notice in verse 1 he says that the time frame is 2 years before the great earthquake that was और dated by astrologers later. और ये जो है, जैसे पहले पद में आमोस 1 अध्याय के 1 पद में कहता है कि ये बात दर्शन जो है, हुकम के 2 वर्ष पहले ये दर्शन की बात मुझे मिली, परमेश्वर का ये दर्शन मुझे मिला, और बाद में जो जितने भी ज्योतिषी थे, वहाँ के ज्योतिषियों ने भी यही बात सच में प्रमाणित की। Verse 1, let's see, verse 2, I guess it is. You should notice that Hebrew parallelism tells you that Zionism is the same thing as is a protection and belief that Israel ought to have their own capital, Jerusalem. ओके, तो यहाँ पर जो दूसरे पद में लिखा है यहोवा सिय्योन से गरजेगा, तो यहाँ जो सिय्योन शब्द है वो दर्शाता है कि जो कैपिटल सिटी है, जो कैपिटल है, वो इस्राएल का यही होगा, सिय्योन। So, as we said, all this is taking place now around 765 BC. और ये सारी घटना जो है करीब 745 बीसी के आसपास हो रही है। Now, what you want to do, starting with chapter 1, verse 3, he's going to call judgment down on the nations around Israel. I mean, yes, around Israel. और तीसरे पद को अगर जो देखें तो ये इस्राएल के चारों तरफ जो देश है, जैसा आराम देश से शुरू करता है, तो ये इस्राएल के चारों ओर के जो देश हैं उन पर किस प्रकार का न्याय आएगा, उसकी पहले बात वो करता है। So he's going to start in the north. He's going to go to the nation, nations in the north. He's going to go to the west. Going to talk about some nations over there. Then he's going to talk about the east. Okay. And then finally he's going to come to Israel. So it's like he's going counterclockwise around the nation of Israel. And when you're kind of disoriented because your head is spinning, he's going to slap you. Okay. Yeah. He said, you're going to be judged too. Yeah. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है पूरब से शुरू करता है, वो दक्षिण से शुरू कर पूरब से शुरू करता है, दक्षिण में आता है, फिर वो पश्चिम में जाता है, फिर इस्राएल के पास में आता है, यानी सारे देश जो उसके आसपास थे दक्षिण की तरफ, उन सबको चेतावनी देता है, और अंत में इस्राएल से कहता है कि तुम भी इतना मन फिराओ तो यही होगा जो उनके साथ होने जाए। Now, if you need to, you might want to get out the map in the back of your Bible and kind of follow him and how he's going to predict judgment upon these various nations. ओके, तो हम ये चाहते हैं कि यदि आपके पास बाइबल में पीछे मैप है तो उसको भी आप फॉलो करें, अगर जो आपके बाइबल में दिया हुआ है तो आप इस चीज को बेहतर से समझ लेंगे। यस। So he starts with Damascus in Syria in the north. और वो दमास्कस से जो है, दमिश्क से शुरू करता है, कहता है यहोवा यूं कहता है 3 पद में,
दमिश्क के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा। You know, Israel is still dealing with Syria. ओके, It's still लेकिन fighting against Syria to this very day. आज भी अगर जो देखा जाए तो सीरिया से आज भी इसराइल लड़ रहा है। उस समय भी यही हालत था। दमिश्क जो है जो सीरिया का हिस्सा है। Look at verse 3. It says that Syria threshed. That is just like the threshing floor where you separate the grain from the chaff. They Yes. threshed Israel like grain. तो यहाँ पर जो कहता है क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंदा है, जिसे जो हार्वेस्टिंग करते थे जो यंत्र, जो फसल की दावनी करते थे, वैसे मानो इन्होंने उसको रौंदा। And verse 3 says they used iron weapons to do the threshing. और इन्होंने करीब लोहे के दावने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया है, जिससे वो थ्रेसिंग कर रहे हैं, जिससे अनाज को भूसे से अलग कर रहे हैं। So how does God respond to Syria, Damascus and Syria, and uh, their warfare against Israel? He's going to send fire and exile upon the Syrians. अब परमेश्वर जो है उनके ऊपर जो है आग भेजेगा सीरिया के ऊपर। It says in verses 4 and 5 that the house of Hazael and the citadels of Ben-Hadad are going to be destroyed by fire. 4 पद में कहता है कि मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। And I think it's verse 5. Let me look back. Verse 5, I will also break the gate of Damascus and then exile all the inhabitants. और 5 पद में कहता है मैं दमिश्क के पेड़ों को तोड़ डालूंगा और ओबेन नामक तराई के रहने वालों को और बेतेल के घर में रहने वाले दंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर हो जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। Now, this is something that it has escaped me until recently. And that is when you see one nation exiling another nation, the exiles are brought to the conquering nation as slaves. तो आज भी ऐसे होता है, पहले भी ऐसे होता था। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक देश कोई भी देश अपने दूसरे नागरिकों को निकाल देता है, देश का निकासा कर देता है, देश से बाहर निकाल देता है, तो वो समृद्धशाली देश में जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। You're going to see this point repeated time and time again in the first 2 chapters of Amos. और आमोस के पहले 2 अध्यायों में इस घटना को आप बार रिपीट होते देख सकते हैं। Okay, so just remember what are we hearing today? We're talking about the poor blacks in America. They ought to be, treated differently because they were made slaves. Guess what? No nation has escaped the fact that they had been made slaves in their lifetime. Yeah. तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो अभी इस्राएल तो एक गुलामी में जाएगा, लेकिन साथ साथ और भी जो देश हैं वो भी गुलामी से नहीं बचेंगे। Yeah. So we go from Damascus and Assyria in the north to Gaza. Oh my goodness. ओके, अब वो फिलिस्तीन के दमिश्क में जाके प्रचार किया है अभी। अब दमिश्क से निकलता है और सीधे चला जाता है गाजा।
Now notice verse 6 and 7. Okay, what is Gaza? Now this is Phoenicia or Yeah. Philistia. Okay, all along the coast, and और in यहाँ पर Philistia you got two major cities. One is Gaza, and one is Phoenicia. या तो फिलिस्तिया में दो बड़े शहर हैं, गाजा और फनिसिया। तो अब ये फिलिस्तिया में जा करके गाजा में ये प्रचार करता है और कहता है 6 और 7 पद में, गाजा के 3 वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड नहीं छोड़ूंगा। So on the coast in the south, you got Philistia, okay? And Gaza is a part of the Philistine empire. And तो just दक्षिण की north of तरफ that on the coast, you've got Phoenicia, and Tyre is a part of the Phoenician empire. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये पश्चिम से दक्षिण की ओर पहुंचा है और दक्षिण में जो फिलिस्तीन है, जो समुद्र के किनारे पड़ता है, वहां पर जाकर के ये प्रचार करता है। और ये क्या नाम है, फिलिस्तिया का जो गाजा है, और एक और शहर है जो उसका हिस्सा है। So when Gaza was fighting against Israel, they exiled the let me get my words here. They deported in the northern the Israelis to Edom on the east as slaves. Verse 6. तो 6 पद में अगर जो देखा जाए तो इन्होंने एदोम को जो है क्या नाम है, जो एदोम के लोग थे उनको बंदी बना लिया है 6 पद में अगर जो देखा जाए, क्योंकि ये सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के बस में कर दे, यानी एक्साइल कर दिया, इनको बाहर कर दिया कि वो जाकर के एदोम के बस में हो जाए। As far as the biblical record goes, when we're looking at Gaza and Israel, Gaza was the first to make Israel into slaves and exile them. तो अगर जो इस तरह के ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यही पाएंगे कि इसराइल और गाजा, तो गाजा एक पहला देश था जिसने इसराइल को गुलामी में ढकेला। And as God has already promised to do in Genesis chapter 12, verses 1 to 3, the one that blesses Israel will be blessed, the one that curses Israel will be cursed. So God brings judgment upon Gaza. तो परमेश्वर जैसे वादा किया था अब्राहम से कि जो इसराइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो उसे श्रापित करेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। इसीलिए जो गाजा ने जो इसराइल को गुलामी में भिजवाया, उसके कारण से गाजा ने जो इसराइल को गुलामी में भिजवाया, इसलिए गाजा पर दंड निश्चित है। And not only Gaza, you'll notice in verse 8, you've got 3 of the predominant major cities in the Philistine Empire mentioned that God is going to judge. और इतना ही नहीं बल्कि 3 और राज्य अगर जो 8 पद में देखा जाए तो उनको भी दंड मिलेगा। लिखा है मैं अश्दोद के रहने वाले, दूसरा शहर है, अश्दोद के रहने वालों को और अस्कलोन के दंडाधिकारी को भी दंड नष्ट करूंगा और अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध। तो 3 देश, एक्रोन, अस्कलोन और अश्दोद के विरुद्ध ये लोग भी उसके साथ दंडित किए जाएंगे। Just a minute, I messed up here. Okay. Now in verses 9 and 10, we're going to talk about Tyre. Okay, this is the famous city of Tyre on the coast in Phoenicia. और 9 और 10 पद में हम सोर के बारे में पढ़ेंगे, और सोर जो है ये भी जो है उसी का हिस्सा है फिलिस्तिया का। Okay. What is their transgression? Look at verse 9. They also delivered up Israelis to Edom as slaves.
और इन्होंने भी जो है इसराइल को जो है आ, सेल कर दिया है कि वो भी उस गुलाम बन जाएं। सोर के 3 यहाँ लिखा है, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बना करके एदोम के बस में कर दिया है और भाई की सी वाचा को स्मरण न किया। Now, notice carefully here in verse 9, Tyre is actually called the brother of Israel here. और यहाँ पर अगर जो 9 पद को ध्यान से देखिए तो जो जब ट्राय है वो उसको जो है इसराइल का भाई कहा गया है। एदोम को जो है एदोम के बस में कर दिया और भाई की इसी वाचा को यानी शोर को जो है उसने इसराइल का भाई कहा है। यस। And that, by the way, you guys know this, but all this racism that you hear about today in whatever country, it is so misguided. Here's a passage for you. Genesis chapter 9, verse 19. It says, every one of us is a brother and a sister together. और इस समय का जो क्या नाम है जातिवाद है और वंशवाद है। वंश क्या कहते हैं कि हम फला वंश के हैं, तो वो जो बात है वो सचमुच अगर जो देखा जाए तो ये मिसगाइडेड है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं, You एक ही see, संतान पिता के संतान है। if the flood existed as we think it did, because the Bible tells us that, then after the flood, you got one family, and from this one family, all the nations come. और So we're all related. क्योंकि हम जानते हैं कि जल प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद जो नूह का परिवार बचा, नूह के परिवार से ही हम सब पैदा हुए हैं, सारी जातियां उसी से आई। And this isn't just an Old Testament idea. The New Testament says the same thing in the book of Acts. Okay, Acts. Help me out, Tom. What's the passage? I'm trying to think. I think it's 18, Acts 18, verse 26. Okay, says we all came from the same father. और उत्पत्ति 18 अध्याय 6 पद शायद ये बताता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। So because Tyre has captured Israelites and sent them into slavery to another nation, to Edom, what's God's response? He's going to destroy the city. Verse 10. ओके, तो क्योंकि शोर ने जो है इनको जो है गुलामी में भेज दिया, इसराइल को एदोम की गुलामी में कर दिया है, इसलिए परमेश्वर 10 पद के अनुसार परमेश्वर शोर को की शहरपनाह पर आग लगाएगा और उसके भवनों को नष्ट करेगा। Now in chapter 1, verses 11 and 12, we're going to go to Edom. Now Edom's on the east, right? So we're going to go to Edom, and note their transgression. In anger, he continually warred against Israel, his brother. Just warring against Israel was his sin. तो यहाँ पर एदोम, जैसे कि अभी तक देखा है आपने, इन लोगों ने, फिलिस्तिया के लोगों ने, शोर के लोगों ने एदोम, इसराइलियों को एदोम के बस में कर दिया। और अब एदोम पर न्याय होता है कि एदोम जो है अपने भाई को बिल्कुल शत्रु से बढ़ करके, शत्रुओं से भी बढ़ करके जो है उनको खदेड़ा है और उनके साथ दया नहीं दिखाई है। इस कारण से परमी और क्रोध में आकर के उनको लगातार फाड़ता रहा है। रोष में जो उसका रोष है, जो उसका गुस्सा है, वो अनंत काल के लिए बनाए रखा है। इस कारण से परमेश्वर का न्याय इस पे आएगा। So now notice that the inhabitants of Tyre on the coast, on the west, and Edom on the east were both called the brothers of Israel. तो पूरब के और पश्चिम के जितने समुद्र के किनारे के लोग थे, सबको भाई ही कहा गया है। And so what's God going to do? He's going to destroy all their citadels, all their
Right, sister. I know. I just, the word I want is just not there. All of their fortified cities, he's going to wipe them out, all their fortifications. तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस्राएल के चारों तरफ जो 4-5 देश हैं उन सब को नाश करेगा। Now, tell me what this sounds like to you. We're now in Amos, Ammon. Ammon is also on the east, okay? What's their sin? They murdered women and children in Gilead. Okay. It says, verse 13, they ripped open, they killed pregnant women in their attempt to expand their borders. और अम्मोन के बारे में कहता है क्योंकि अम्मोन को इसलिए दंड दूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों के पेट तक चीर डाला। हाँ। Does that sound like October 7th to you? It should. Yeah. So you've got Gaza doing the same thing that Ammon did, 2,700 years ago. तो जैसे गाजा ने किया था वैसे ही करीब करीब यहाँ पर अम्मोन भी कर रहा है करीब 27 साल के बाद। Now, what's God going to do? In verses 14 and 15, God's going to destroy the citadels, that's their fortified cities, okay? And he's going to exile the rulers and the kings as slaves. और 14 और 15 पद में वो यहाँ पर देखा जाए तो राजाओं को और हाकिमों को इसके लिए दंडित करेगा और उनको भी बंधुआई में डालेगा। You've got a lot of messy stuff going on here. तो यहाँ पर बहुत सारे संदेश जो है आप पा सकते हैं। बहुत सारी शिक्षा यहाँ से मिलती है हमको। Now, on the east, in addition to Edom and Ammon, you've got Moab. And Moab's sin was desecrating the bones of the king of Edom. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरब में जो है अमोन जो है उनके साथ में अन्याय कर रहा था जैसे कि पश्चिम में गाजा कर रहा था। Now, guys, this seems to be a sin not because they cremated the bones, okay, but because they desecrated the king and his tomb. Okay. और यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा अपराध है वो ये नहीं है कि 2 अध्याय में मोआब के बारे में कहा गया है कि मोआब ने जो हड्डियां जला दी बल्कि जो एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूरा कर दिया। इसलिए मोआब में आग लगाऊंगा और इसका मतलब हो गया कि जो राजा का जो की हड्डियां जलाई है जो सम्मान नहीं किया है इसके कारण से ऐसा। So what I'm saying is, okay, this is an example, a rare example of cremation being a sin. This is not repeated. This is not the norm in the Old Testament or the New Testament. Cremation is not a sin. तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग इसको कोट करते हैं और कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाना नहीं चाहिए कि जलाना पाप है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये घटनाएं बार बार इस तरह की नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जलाना पाप नहीं होता है किसी डेड बॉडी को। So now all that about Moab is in chapter 2, verse 1. Okay, now look at verses 2 and 3. What's God going to do to judge them for desecrating the bones of the king in cremation? He's basically going to cremate them in the fires that are going to consume their cities. तो जैसे इन्होंने राजा का अपमान किया है वैसे ही जो है इनको भी जलाएगा। जैसे अपमान करके उसकी हड्डियों को चूर चूर किया है जलाया है वैसे ही परमेश्वर इनको भी
मोआब के लोगों को भी जलाएगा। So that's going to end chapter 2, verse 3 is going to end Amos's, going clockwise around Israel and judging all the nations. Now he's तो going to turn on Israel. इस प्रकार से इसराइल पूरब से दक्षिण होते हुए जो क्लॉकवाइज मूवमेंट था वो अब यहाँ पर समाप्त करता है। So why is God going to judge Israel? Look at verse 4. It's because they rejected the law of the Lord. अब इसराइल का न्याय क्यों करेगा परमेश्वर? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। इसके जैसे में लिखा है। Yes. Okay, we need to talk further, okay, about the law. On the one hand, we know that the law was set aside, but how is it set aside, or in what way was it set aside? We need to answer that because 1 Timothy chapter 1 verses 8 to 10 says the law is still useful today. It can be used lawfully. Yeah. तो यहाँ पे हमें इस पर थोड़ा सा चर्चा करने की जरूरत है व्यवस्था पे, क्योंकि इन लोगों ने व्यवस्था का अनादर किया है, उसकी विधियों को नहीं माना, जबकि हम जानते हैं कि व्यवस्था अब ना रहे तो इसका मतलब क्या है? जबकि दूसरा तिमोथियुस में कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए फायदे की, एक प्रकार से देखा जाए व्यवस्था हमारे हित के लिए दी गई। तो इसका मतलब ये क्या है? विरोधाभास है कि कुछ और है इसमें? So I take it anything that the law describes as far as the character of man or the what we're like and what God requires from us, all that is still usable and still in place. So when God says, I don't want anybody to be a homosexual in the Old Testament, that's the same for the New Testament as well. Yeah. तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था की बहुत सारी बातें जैसे वो आज लागू नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी व्यवस्था की बातें हैं जो लागू हैं। जैसे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है, समलैंगिकता पाप है, और वो आज भी पुराने नए नियम में भी होमोसेक्सुअलिटी को पाप माना गया है। Now, so the Old Testament has a lot to speak about as far as character and virtue, and that should go from the Old Testament into the New Testament. But the rituals and the things that were not personal character issues, those things stopped. तो व्यवस्था में दो तीन चीजें हैं, जैसे कैरेक्टर इश्यूज है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। पुराने नियम में जो था वो नए नियम में, लेकिन जो कुछ परंपराएं थी, जो कुछ रीत रिवाज थी, वो हटी हैं, क्योंकि वो मात्र छाया मात्र थी, मसीह को दिखा रही थी। जो बलिदान व्यवस्था है और जो चीजें हैं वो मसीह के आने तक केवल वो मान्य थे, क्योंकि मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। लेकिन जो करेक्टर है, जो चरित्र निर्माण वाली चीजें हैं, चरित्र से जुड़ी चीजें हैं, चारित्रिक डिसीजन वाली चीजें हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं। Okay, I need to take back something I said, guys. Amos isn't through judging all the people around Israel. In chapter 2, verses 4 and 5, he's judging Judah before he gets to Israel. So it was Judah's sin of rejecting the law that's going to cause God to judge them. तो अभी तक के यहूदा जो आमोस है, 1 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय के 3 पद तक, जो गैर इस्राएली हैं, उनके बारे में उसने बात किया है। लेकिन उन पर जो न्याय आएगा उसकी चर्चा उसने किया है। और लेकिन अब ये जो है इस्राएल पर जाने से पहले यहूदा के पापों का स्मरण कराता है। And so what will be the judgment? He says he's going to burn down Judah and Jerusalem. और इसका परिणाम, इनके पापों का जो परिणाम है लिखा है, जो पाप इन्होंने किया कि विधियों को नहीं माना,
झूठे देवताओं के कारण उनके पीछे पुरखा चलते थे, वो भटक गए। इसलिए 5 पद में कहता है, यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। And of course, that's going to be done by Babylon, but it's going to be done, you know, 150 years later. और ये घटना जब आमोस ने कही है, वो सचमुच बेबीलोन के द्वारा हुआ है, और करीब इस भविष्यवाणी के 150 साल बाद ये घटना घटी। So, judgment is finally pronounced upon Israel, starting in chapter 2, verse 6. और 2 अध्याय के 6 पद के अनुसार अगर जो देखा जाए तो इसराइल पर भी न्याय आएगा, और उसके भी अपराधों के कारण, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए, दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला। The first things are singled out as sins are injustice and greed. और सबसे बड़ा पाप जो है, जो न्याय होगा, वो है कि जो निर्दोष है, निर्दोष लोगों को दोषी ठहराना, और इसके कारण से, और गरीबों को लूटना, इसके कारण से इन पर न्याय होगा। Notice in verse 6 that Israel actually sold their own people, and not only sold their own people into slaves, he sold the righteous into slavery. तो इसराइल ने ना केवल 6 पद को अगर जो देखें 2 अध्याय के, तो इसराइल ने ना केवल जो है लोगों को बेच दिया, गरीबों को बेच दिया, बल्कि धर्मी लोगों को भी उसने बेच डाला, गुलामी में डाल दिया। That's probably a lower blow than what we've read about the other nations. They seem to have wanted to cleanse their country of righteousness. तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो है इतने दुष्ट हो गए कि अपने देश से धार्मिकता को ही मिटाना चाहते हैं। In verse 7, you see that they also sold the poor for very small profits. और 7 पद में हम देखते हैं कि वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं, और नम्र लोगों को मार्ग से भटका देते हैं। बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे नाम को आप पवित्र ठहराते हैं। In verses 7 and 8, we see that another social issue that they had was immoral, perverted sex. और 7 पद में और 8 पद में अगर जो देखा जाए, तो जो अनैतिकता का जो पाप है, वो भी ये चरम सीमा पे है यहाँ पे। Notice it says that the father and the son shared the same woman to defame the Lord's name. It's like they were saying, in your face, God. यहाँ पर अगर जो देखा जाए, तो बाप और बेटा दोनों एक ही स्त्री के पास जाते हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो वो परमेश्वर के नाम को निंदित करते हैं। You know, that seems to be where America is today. Americans seem to have almost no shame. They'll do anything. इस समय जैसे अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है इन दिनों में, क्योंकि लग रहा है उनकी लज्जा सब खत्म हो चुकी है। Notice in verses 9 and 10, forgetting God's past deliverances. They're going to be judged for forgetting what God has done for them in the past. और 9-10 पद में परमेश्वर याद कराता है कि जो इनका न्याय इसलिए होगा कि जो पिछले समय पे परमेश्वर ने जो आशीषें दिया, उसको इन्होंने भुला दिया है। क्योंकि मैंने उनके सामने अमोरियों को नष्ट किया, उनकी लंबाई देवदारों की सी, जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने इनके ऊपर उनके फल, नीचे से उनकी जड़ें नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ, मगर ये सब भूल गए क्या? The Amorites, okay, are described but in comparison almost like giants compared to the Israelites. और यहाँ पर अगर जो देखा जाए, तो अमोरियों के बारे में कहा गया है कि बड़े बड़े
दानों के समान थे, मानो कि बाज वृक्षों के जैसा उनका शरीर था, बल था, लंबे लंबे थे, देवदारों के समान लंबाइयां थी, दानों थे एकदम से। हाँ। And Israel had forgotten that God conquered the Amorites, an enemy that they could not have defeated. और शायद इसराइल इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े दानों को जीत लिया था उसके लिए। And this shows you how degrading the society was in Israel. In verses 11 to 13, they tried to corrupt God's servants, both the prophet and the Nazarite. और यहाँ पर देखा जाए तो भविष्यवक्ता और नजीरों को भी इन्होंने ना को भ्रष्ट कर दिया है। They made the Nazarite break his vow to God respecting wine or liquor. So they got him to drink when they weren't supposed to drink. और जबकि नजीर लोगों को शराब से बचना था, अल्कोहल से बचना था, लेकिन उनको भी वो पिला रहे हैं। And the prophets, they forbade the prophets to prophesy God's judgment or God's standard about anything. They didn't want to hear it. नबियों को भी धमकाते थे कि वो लोग भी भविष्यवाणी ना करें, परमेश्वर की बात ना बोलें। In verse 13, this is kind of called the last straw. और 13 पद जो है एक अंतिम चेतावनी है, लिखा है, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। So in verses 14 to 16, God tells him through Amos that Israel will not be able to stand in battle now. They will perish in battle rather than being saved. तो 14 और 15 पद में आमोस के द्वारा परमेश्वर कहता है कि आमोस अब बचेगा नहीं, युद्ध में बचेगा नहीं, युद्ध में खड़े होने के लायक भी नहीं बचा। Notice how the words perish and saved are used here. These are the same words in the Greek text that are used in the New Testament Greek text. Okay, it has nothing to do with heaven and hell. It has to do with being delivered in battle, or if God doesn't deliver you, then you perish. You're going to die. तो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि परमेश्वर ये कहता है कि यदि तुम मन न फिराओ तो निश्चय ही नाश हो जाओगे। So basically, all that was almost like an introduction for Amos. In chapter 3, verse 1, all the way through 6:14, he's going to explain to Israel that Israel is the lion's main prey. तो अभी तक के देखा जाए तो पूरा इंट्रोडक्शन ही है एक प्रकार का जो आपने देखा आमोस की पुस्तक का, लेकिन 3 अध्याय में इस्राएल को के बारे में बड़ी बात कही गई है कि कहता है पहले पद में, हे इस्राएल या बच्चन सुनो कि यहोवा ने तुम्हारे लिए विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है कि मैं मिस्र देश में से ले आया और पृथ्वी के सारे कुलों में से केवल तुम्हीं पर मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। So we will pick up there next week and find out all the social justice or social injustice that brought God's judgment upon the northern kingdom. अगले शुक्रवार को जो है हम 3 अध्याय को देखेंगे जहां पर सामाजिक अन्याय को परमेश्वर का दास किस प्रकार से जोर शोर से उठाता है। But you should be unable to walk away from the first 2 chapters believing that God is going to take anyone's opposition to Israel lightly. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी इस्राएल को बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। We don't have to condone any bad decision that Israel makes, but we can't stand against them when they're in the right. हम और इस्राएल के गलत फैसलों को कंडेम कर सकते हैं,
मगर इस्राएल यदि कोई अच्छा फैसला करता, अच्छा काम कर सकता, तो उसको हम नकार नहीं सकते। Guys, You know, that's it's all I got amazing. for today. It's amazing how the covenant to Abraham is still valid today as it was in the ancient times. Any country, nation that has opposed Israel has been destroyed. Yeah. And it's And also, you know, showing you that sin on Israel's part does not break or nullify the covenants that God gave them. The Abrahamic covenant, the Davidic no, covenant, and the new covenant are guaranteed. They're going to be fulfilled. yeah, दैट्स गुड। तो ऐसा देखा जाए तो इसराइल जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, वो अब्राहमिक कवनेंट और डेविडिक कवनेंट, ये सारे कवनेंट जो है इसराइल के लिए जो परमेश्वर ने किया था वो पूरे होंगे। इसराइल भले ही दुष्टता किया है, पाप करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। yeah. Despite the sins of Israel, they are still God's chosen children. Yep. And always will be. Always will be. And guess what? We're chosen too. Ephesians 1, verse 3 and 4, we're chosen, but and we're chosen for a different thing. We're chosen to do something differently. So they were chosen to create and to protect the revelation of God, the law that God gave them. They were supposed to keep that intact and undiluted. Okay? Yeah. That's what God really chose them to do. And they did a good job of that, by and large. They didn't follow it themselves, but they didn't let it dissipate some way. So that's a good. राइट। तो इसराइल देखा जाए तो चुना हुआ वंश था परमेश्वर का, इसलिए चुना गया था कि वो उसके द्वारा अपना प्रकाशन जो है, जो वचन है, वो सुरक्षित इंसानों तक पहुंचा सके। और इसराइल भले ही नहीं चला परमेश्वर के वचन पे, लेकिन उसको संरक्षित रखा, और उसी कारण से उसकी बाइबल आज हमारे पास में है। और हम भी चुने गए लोग हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है। If you look at Ephesians chapter 1, verses 3 and 4, our election is not so much having to do with the revelation that God gave that had to be written down. Our election has to do with living it out in a holy and blameless lifestyle before the world. That's our election. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो हमारा जो चुनाव है, जो हमारा जो इलेक्शन है परमेश्वर ने जो दिया है, वो प्रकाशन को संरक्षण करने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए जो सामर्थ परमेश्वर देता है वो उपलब्ध है कि हम इस संसार में लिविंग टेस्टिमनी बन जाए, एक जीवित गवाह बन जाए। इसकी सामर्थ परमेश्वर ने दिया, ये दिखाना चाहता है कलीसिया के द्वारा। So thank you, brothers. Love being with you. And I'll see you next week. God bless. Thank you, RP, for translating. Good job there. Thank you.